नमस्कार। माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल 1966 की 7th वीडियो में आप सबको मैं रथिन विश्वास ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर की रूबरू की तरफ से वेलकम करता हूं। आइए हम लोग माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल की 7th वीडियो इस सीरीज की देख लेते हैं, जिसमें पहले वीडियो में हम लोग प्रिलिमिनरी चैप्टर 1, चैप्टर 2 सेकेंड वीडियो में, चैप्टर 3 जो जनरल वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको थर्ड वीडियो में, चैप्टर 4 फोर्थ वीडियो में, चैप्टर 5 फिफ्थ वीडियो में, चैप्टर 6 सिक्स वीडियो में देखें। अभी हम लोग 7th वीडियो में इसमें अलाउंसेस ऑफ ट्रेनिंग्स एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट रूल नंबर 26 टू रूल नंबर 30 है, इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसलेनियस और एक वीडियो में अलग से हम लोग डिफरेंट शेड्यूल के बारे में देख लेंगे और उसके बाद सैम्पल क्वेश्चन आंसर के बारे में और वीडियो में देखेंगे। चैप्टर 7 अलाउंस ऑफ ट्रेनिंग्स एंड इशू ऑफ सर्टिफिकेट, इसमें रूल नंबर 26 में ट्रेनिंग्स, 27 में स्टाइपेंड टू ट्रेनिंग्स, 28 में सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग्स, 29 में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट एंड 30 में सर्टिफिकेट टू बी डिलीवर्ड टू मैनेजमेंट। ये रूल्स है। Trainees, every persons to be newly employed in mine while undergoing training in accordance with this rule shall for all purpose be considered only as training। जो न्यूली एम्प्लॉयमेंट करते हैं और इस रूल के अंडर अकॉर्डिंग, ये जो माइंस वोकेशनल ट्रेनिंग रूल है इसके अंडर ट्रेनिंग करेंगे, इनको सभी पर्पस के लिए ट्रेनिंग के हिसाब से ही माना जाएगा। Training stipend. Every person while undergone training under Chapter 3 and under Rule 12 and 15 shall be paid by the owner, agent or manager daily allowance for every day of attendance at an amount equivalent to the wage, inclusive allowance, which will be payable to him on employment after completion of training, subject to maximum of rupees 1.5 per day, provided that the maximum effort rate shall not apply to in case of persons already working in a mine while undergoing training in accordance with Rule 7. Every person's undergoing training under Chapter 4, Rule 13, 14 and 17 shall be paid by the owner, agent or manager and allowance per lecture attended by him। जो लोग माइंस में ट्रेनिंग अटेंड करेंगे उन ट्रेनिंग्स को जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं उसके बारे में इसमें बताया है। जो लोग रूल 12, 15 एंड चैप्टर 2 के 3 के अंडर में जो ट्रेनिंग करेंगे, बेसिक ट्रेनिंग करेंगे, उन लोगों को जो अलाउंस दिया जाएगा वो मैक्सिमम 1.5 रुपया पर डे का हिसाब से दिया जाएगा। जो लोग रिफ्रेशर ट्रेनिंग या रूल 13, 14 या 17 के अंडर में ट्रेनिंग करेंगे उनके लिए पर लेक्चर्स अटेंड के हिसाब से उनको ट्रेनिंग अलाउंस दिया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ ट्रेनिंग्स। Every person who undergoes a course of training prescribed in this rule shall, on completion of the training, be interviewed by the training officer, and if the said officer is satisfied as the progress of and performance of the trainees, he shall grant a certificate in Form A or Form B, as case may be. The certificate so granted shall be countersigned by the owner, agent, or manager. Where the training officer is not satisfied with the progress or performance of any training, he shall report the same to manager, who may either discharge him or, if he thinks fair, arrange to give him further training. Cost of photograph to be affixed on certificate in Form A or Form B shall be borne by the owner or agent. A person who has obtained a certificate on successful completion of the training shall be eligible for absorption in any mine to the category of the post for which he has been trained.
ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग ऑफिसर का इंटरव्यू करेंगे और इंटरव्यू के बाद उनको फॉर्म ए और बी जिसका ज़रूरत है बेसिक के लिए फॉर्म ए और फ्रेशर या स्पेशल के लिए फॉर्म बी ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इशू करेंगे। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट in if any person proves to the satisfaction of the training officer that he has lost the certificate granted to him under Rule 28, the training officer may, on payment of cost of photograph, to be affixed the certificate grant to him a copy of the certificate. The word duplicate shall be stamped across the copy. अगर कोई पर्सन्स अपना गलती नहीं है ऐसे कंडीशन में सर्टिफिकेट खो जाते हैं तो ट्रेनिंग ऑफिसर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स के लिए फोटोग्राफ का कॉस्ट पर्सन्स को बेयर करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट टू बी डिलीवर्ड टू मैनेजमेंट एवरी पर्सन एम्प्लॉयड इन माइन if he obtained the certificate prior to such employment at the time of the employment and if he obtained the certificate during the course of employment within such time as may be specified by the manager of the mine deliver the certificate issued to him under this rule so the manager of the mine who shall keep the certificate in safe custody and a record issue a receipt for the same. On the termination of employment, certificate so deposited shall be returned to employee. अगर किसी के पास पहले से सर्टिफिकेट है या माइंस में कोई ट्रेनिंग करते हैं तो सर्टिफिकेट मैनेजर के पास जमा करना है। मैनेजर सर्टिफिकेट रख के एक रिसिप्ट देंगे और इसका एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेशन के बाद उस सर्टिफिकेट वापस करेंगे।